Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Myself Shweta Mudgal, a representative of Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we are going to start chapter 6 of civics, that is understanding our criminal justice system. Take out your books, we will start. Students, in this chapter we are going to cover these topics. Number 1, key players of criminal justice system. Number 2, what is the role of the police in investigating a crime? What is the role of public prosecutor and what is the role of the judge? And the last, what is a fair trial? Student, this is a case study given in your chapter. मैं आपको इसको brief में बताऊंगी. First of all, this is a story of Mr. and Mrs. Shinde and their maid Shanti and her brother Sushil. Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for an hour. वो चेन को ढूंढ रही हैं, उनको चेन नहीं मिल रही है. वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि मुझे चेन नहीं मिल रही है. आई सस्पेक्ट शांति माइट हैव स्टोलन इट. मुझे लग रहा है कि शांति ने इसको चुराया है. अब इसके बीच में क्या होता है, मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's ट्रंक. शांति के ट्रंक को देखते हैं और वहाँ से उन्हें 10,000 रुपीज़ का एनवलप मिलता है. He screams at Shanti saying that this is the money she got from selling the chain. उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मनी तुमने चेन को चोरी कर कर ली है. अब शांति कहती है नहीं, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सब इंस्पेक्टर SI राव को रिकॉर्ड कराते हैं FIR. FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. तो सबसे पहले वो कहाँ गए, पुलिस ऑफिसर के पास पुलिस स्टेशन में FIR रिपोर्ट लिखवाने के लिए. किसके, शांति के अगेंस्ट में. अब शांति सोचती है कि मेरे पास तो कोई लॉयर है नहीं एंड शी इज़ नॉट इन एबल टू हायर अ लॉयर. सो स्टूडेंट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ प्रोविजन, इफ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू हायर अ लॉयर, then this is the fundamental right of a citizen to be defended by a lawyer. If the person is not able to hire a lawyer due to poverty or some other disability, this is the right of a citizen to be defended by a lawyer. So Shanti को advocate Roy as a defense lawyer मिल जाती हैं. ठीक है. Now अब क्या होता है, सारा इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है. कमला रॉय दोनों साइड से पूछताछ शुरू करती हैं, मिसेस शिंदे से भी और शांति से भी. शांति बोलती है मैं इनोसेंट हूँ और मिसेस शिंदे बोलती हैं कि इन्होंने मेरी चेन को चोरी किया है. नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, अब कमला रॉय क्रॉस एग्जामिन करती हैं दोनों साइड के विटनेस को. तो वो क्या बोलती हैं कि दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन. नेक्स्ट, nor did you recover the chain on Shanti. शांति से चेन हमको मिली भी नहीं है. and she is working here from last 3 years and nothing has been stolen from your house and she was getting 1,000 rupees per month salary. She could save that much money. तो ये वो प्रूफ करने की कोशिश करती हैं कि शांति इनोसेंट है. नाउ स्टूडेंट, इसी समय जब केस ख़त्म होने वाला होता है तो एक गैंग पकड़ा जाता है जिसके पास से कि मिसेस शिंदे की चेन मिल जाती है इंस्पेक्टर राव को. अब इंस्पेक्टर राव बोलते हैं कि ये चेन यहाँ पर मिल गई है. नाउ द फाइनल डिसीजन जो जज की साइड से लिया जाता है उसमें क्या होता है, शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड. शांति इनोसेंट है और उसको सेट फ्री. एक्विटेड मीन्स फ्री. ठीक है. नाउ अब फ्रॉम द अबव स्टोरी देयर आर 4 की पिलर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. 4 की प्लेयर्स of the criminal justice system. Number 1, police. Number 2, public prosecutor. Number 3, defense lawyer. And the last is judge.
police who is taking a case and reporting it as a first witness. Public prosecutor is a law officer which is appointed by the government. Defense lawyer who is defending the case, and judge who gives the final decision. So, we can say that there are 4 key pillars in this story. So, students, we can say that there are 4 key players in the criminal justice system. The public prosecutor, first is police, second is public prosecutor, defense lawyer and the judge. Okay, now we are going to cover the second topic, that is what is the role of police in investigating a crime. So, students, we have covered key players of the criminal justice system. We are reading what is the role of police in investigating a crime. पुलिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम. जैसा कि अभी हमने शांति के केस में देखा कि सबसे पहले मिस्टर शिंदे FIR रिपोर्ट करवाने कहाँ पर जाते हैं, पुलिस स्टेशन पे. तो वी कैन से द वर्क ऑफ द पुलिस इज टू कलेक्ट एविडेंसेस, रजिस्टर complaint and record statement of the witnesses. ठीक है, these are the works done by the police. Collect evidences means the fact which makes you believe that something is true, that is evidence. Register complaint, record statement of the witness. Witness is the person who is called upon the court to provide first hand account of what she or he knows, heard and seen. उसने क्या देखा, सुना और वो क्या जानता है, वो witness होता है. In Hindi we call it गवाह. ठीक है, तो after that police tries to form an opinion. If the police thinks that the evidences point to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. What is the charge sheet? Charge sheet, student, charge sheet is a kind of record which is made in the police station. Kind of record which is made in the police station to charges against the accused person. Accused person who has done something wrong. Students, internal question 1 is mention any one important function of police. I am repeating, mention any one important function of police. Now, the work of police. Police has to follow the certain guidelines which is laid down by the Supreme Court. Police must follow these guidelines at the time of arrest, detention and interrogation. अरेस्ट करने के समय पे, लॉकअप के टाइम पे और इंटेरोगेशन के टाइम पे. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. And these are the Article 22 of the Constitution and criminal law guaranteed to every arrested person. These are the fundamental rights which are given in our Constitution under Article 22. First of that is that the person who is being arrested must be informed at the time of arrest and the right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. He cannot be ill-treated or tortured during arrest or in custody. Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused. Why it's so? Because the police can use means to ask him to reveal something which actually does not happen. And the last is boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. These are the fundamental rights which given to every arrested person under Article 22 of Constitution. Students, now here note down internal question number 2, that is what is the full form of FIR. I told you while explaining the Shanti's case, FIR. Okay. Now we are going to cover what is the role of public prosecutor. Before that,
the meaning of what is public prosecutor. Students, I told you that public prosecutor is a law officer appointed by government who works in the interest of the state as well as on the behalf of government, as he is appointed by the government. So we can say that public prosecutor is a law officer, and his works begins just after the police interrogation is done and the charge sheet has been filed. As an officer, it is his duty to act impartially. It is his duty to act impartially. What is the meaning of impartially? I am just going to tell you. We are talking about public prosecutor. As an officer, it is his duty to act impartially and present full and material facts, evidences and witness before the court to enable the court to make decision, to enables the court to decide or to make decision. I am again repeating that public prosecutor is a law officer who is appointed by a government. His works begins just after the police interrogation is done and the charge sheet has been filed in the court. And he has to work impartially. Impartially means not in favor of one group over another, or we can say with unbiasedness or a neutral. ठीक है, एंड और क्या क्या प्रेजेंट करना होता है उसको, एविडेंसेस, फुल फैक्ट, विटनेसेस, ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके, फाइनल डिसीजन ले सके. ये वर्क होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का. नाउ द वर्क ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ जज. कैन यू से स्टूडेंट्स की जज का रोल क्या होता होगा? जज इज लाइक अ अंपायर इन अ गेम. अंपायर इन अ गेम मतलब ही गिव फाइनल डिसीजन. अगर किसी कोर्ट के बारे में हम देखें तो एक पिक्चर आती है जिसमें कि एक लेडी, उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है काले रंग की. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कानून अंधा होता है. अंधा का मतलब ये कि वो जो डिसीजन लेता है वो इम्पार्शियल होता है. दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, एविडेंसेस, विटनेसेस, चार्जशीट, फाइल, सब के बाद में जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो जज लेता है, और उसलिए हम बोलते हैं कि कानून अंधा होता है. तो ही कंडक्ट्स हिज वर्क्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जज. ही कंडक्ट्स his work with impartiality and unbiasedness. As I have told you, impartial means not in favor of one group. He gives the final decision, and or we can say the final judgment. On the basis of the final judgment, sentence is given. Sentence means saja. The person could either be jailed or fined, and in sometimes both things could happen. This is the work of a judge. Now the last is, and the very important topic is, what is fair trial. Students, what is fair trial? जैसे कि मैंने अभी आपको शांति के केस में बताया, पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसा होता तो वो अनफेयर ट्रायल कहलाता. शांति के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसको सस्पेक्ट किया, फिर पुलिस ने उसको पकड़ा. अगर उसको, शांति को डिफेंस लॉयर नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको कोई प्रूफ करने वाला, क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला नहीं होता, तो ये क्या होता? अनफेयर ट्रायल होता. तो फेयर ट्रायल में अंडर आर्टिकल 21 वी टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ. अंडर राइट टू लाइफ वी टॉक अबाउट लिबर्टी फ्रॉम any kind of legal procedure. ठीक है? Liberty from any kind of legal procedure. And this means that number one,
the trial would be conducted in an open court. Number 2, first the trial would be conducted in an open court. विटनेस भी हो, एविडेंसेस भी सामने हो, दोनों लॉयर क्रॉस एग्जामिन भी कर रहे हो, तब हम बोलेंगे कि ये फेयर ट्रायल हो रहा है। और वहाँ पर एक्यूज भी होना चाहिए। देयर वुड बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। नाउ द थर्ड इज द matter would be decided on the base of evidences only, not on the base of the evidences that was given in police room. Evidences plays a very important role, means facts which make you believe that something is true. And the last is that it should be impartial. किसी भी एक पार्टी का फेवर नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने शांति के केस में देखा। और पूरे एविडेंसेस हमारे सामने आए कि उसने चोरी नहीं करी है, उसके पास से चेन नहीं मिली है, किसी ने उसको चुराते हुए नहीं देखा है। सो वी कैन से अगर ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं तो वो ट्रायल एक फेयर ट्रायल कहलाएगा, अदरवाइज वो अनफेयर ट्रायल कहलाएगा। स्टूडेंट्स नोट डाउन इंटरनल क्वेश्चन 3 हेयर। नेम द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज राइट टू लाइफ। Name the article of Indian Constitution that guarantees the right to life. So here we finished the chapter. I hope you understood it. Thank you.